guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good today. So सबसे पहले मुझे पता है बहुत टाइम के बाद हम एक कम्युनिकेटिव वीडियो बनाने वाले हैं. बहुत टाइम से मैं इसको करने का सोच रही थी. So finally I'm doing it today. So I'm very excited इस वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए. And then next I would like to tell you that this video is going to be in two parts. So सबसे पहला part जो होगा उसमें मैं आपको product के बारे में बताऊंगी. So I've recently bought a lot of makeup. So I'm going to be telling everything about the newly brought makeup जो मैं लेकर आई हूँ. और सेकंड पार्ट जो होगा वो हमारा होगा मेकअप ट्यूटोरियल जो मैं लुक क्रिएट करूँगी इन मेकअप प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के बाद या करते हुए. सो या विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स स्टार्ट आवर पार्ट 1. So as you guys can see that right now I am not wearing any makeup. This is literally my bare skin. I have just applied the lip balm. उसके अलावा मैंने कुछ भी अपने फेस पे अप्लाई नहीं किया हुआ है. This is literally like my unfiltered skin. Other than that, इस वीडियो में जो प्रोडक्ट्स मैं लेकर आई हूँ मैं बहुत टाइम से ट्राई करना चाह रही थी. सो दिस इज़ रिगार्डिंग अ के ब्यूटी मेकअप प्रोडक्ट. सो अगर आप लोग को नहीं पता है तो रिसेंटली मैं इंडिया गई थी और वहाँ पे मैंने जाके नायका से के ब्यूटी जो कि कटरीना कैफ का ब्रांड है, मेकअप ब्रांड, उनकी मैंने मेकअप प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा सुना था इंडियन इन्फ्लुएंसर से या हर जगह, या पीपल वर लाइक इनके प्रोडक्ट्स वो आर रियली नाइस मेकअप प्रोडक्ट. अनफॉर्चुनेटली वो इंटरनेशनल डिलीवर नहीं करते हैं. सो इस वजह से मैं बिल्कुल यूज़ नहीं कर पाई और कोई हाल फिलहाल में या उस ड्यूरेशन में इंडिया नहीं गया था जिसको मैं बोलती कि मेरे लिए आप प्रोडक्ट्स लेकर आइए. सो व्हेन आई फाइनली वेंट आई थॉट कि नाउ इज़ द टाइम आई शुड बाय ऑल द प्रोडक्ट्स. सो फाइनली मैंने कुछ के ब्यूटी के प्रोडक्ट्स खरीदे हैं नायका से, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या मैं लेकर आई हूँ. एंड मैंने इनको बिल्कुल यूज़ नहीं किया है. सो जो सेकेंड पार्ट होने वाला है जिसमें हम मेकअप करेंगे, सो वट एवर आई विल बी यूजिंग, तो उसमें मेरा फर्स्ट रिव्यू आपको मिलेगा whether I like the formula or not. So yeah, let's get started with first product. Alright, as you guys can see, this is basically the kit जिसमें सारे products हैं जो मैंने के ब्यूटी से ख़रीदे हैं and I'm very excited to try them out. So it's basically it has everything, foundation से लेके blush, concealer, like full face glam के लिए जो products चाहिए होते हैं मैंने सारे खरीद लिए. So let me show you guys the first product. So ये खुला हमारा kit. So सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ. It is definitely not के ब्यूटी का product, but this is here. So this is basically the Nykaa sheet mask. और ये इनके बारे में यार मैंने बहुत सुना है. एक तो इतना अच्छा ऑफर होता है इन शीट मास्क के ऊपर कि if you buy 5 you get 5 free. So when I was in India I literally bought them like 2 stacks में और मेरे पास 20 फेस मास्क थे. कुछ मैं वहाँ पे छोड़ आई हूँ लेकिन मैंने इनको रेगुलरली यूज़ किया है. तो आते हुए मैंने 3 पैकेट्स इनको रखा था. एक्चुअली 4 रखा था, एक मैंने फ़्लाइट में यूज़ कर लिया था, बाकी 3 आई एम सेविंग इट बाद में यूज़ करने के लिए. सिंस नायका के जो शीट मास्क होते हैं यहाँ अवेलेबल नहीं होते हैं. यहाँ पे डेफिनेटली इनसे अच्छे ब्रांड्स होते हैं जिनके शीट मास्क होते हैं, बट आई रियली वांटेड टू ट्राई दिस आउट. बट या दिस रियली वर्क्स. तो सबसे पहले मैंने शीट मास्क खरीदे. सो राइट नाउ आई हैव 3 ऑफ दीज. So moving on to the next product जो कि है के ब्यूटी का फाउंडेशन. It's a hydrating foundation which also says it's enriched with avocado plus mango butter. और शेड मैचिंग के लिए मैंने foundation.com से शेड मैच किया है. अगर उसमें आपको डिटेल वीडियो चाहिए so let me know, I'll create a detailed video how I virtually match my shades if I'm buying out a new foundation shade किसी भी ब्रांड का. So let me know in the comments below and I will create a new video. Now the shade which I've bought in this foundation is actually 13OY medium. So medium के approx मैंने shade match किया है. So next part जो होने वाला है उसमें I'm going to try out this foundation and I'll see whether it actually matches my skin tone or not. Next product which I got is definitely foundation के बाद concealer आता है. So I bought the concealer from के ब्यूटी और इसको भी मैंने लिया है medium shade के अंदर. And I'm not sure कि इसका formula कैसे होने वाला है, whether it's a matte formula or it's going to give me a little dewy finish or howsoever. So I'm really excited to try this one out as well. और इसमें भी लिखा हुआ है कि it's enriched with marula plus rose hip oil. Next I got is this K Beauty loose powder and it is in the shade I think banana. Let me check that out for you guys. So yeah, it's actually in the shade banana and this is how the packaging looks.
Now coming to the fourth product, I got this matte blush which is in the shade, I think so, it's called as Coral Charm, and I really like, you know, how thin and sleek the packaging of this blush is. You guys can see it looks so nice. So let me just open this and show it to you guys. मुझे इसकी packaging तो सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है. So this is how it looks. The color is a coral color, and I think it says matte, so let's see how it works and whether it looks good on my skin or not. But definitely love the packaging. It is so, you know, it's so light and so easy to carry, but also at the same time it's very small. It's not even huge. Now coming to the next product, I got these two you know, eye pencils, kajals, or eye pencils I should say. One is in the color, you know, black, and another one is in the color green. I really like using green kajal on my waterline, or maybe sometimes I like to create as a, you know, smoky looks, or sometimes, you know, creating a green eyeliner kind of effect. So that's why I got the green one. और ये दोनों मैं लेकर आई हूँ, and ये उनके best selling थे. So even the foundation was also their best selling, और ये जो काजल था ये भी best selling था. They just say that you just apply it and it just glides on, like the formula is very smooth and buttery. So अभी तो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ. Again मैं बोलूँगी part 2 में पता चलेगा कि ये कैसा काम करते हैं और कैसा नहीं. तो मैं एक खोल के आपको दिखाती हूँ पैकेजिंग. सो दिस इज हाउ बेसिकली इनकी पैकेजिंग है. सो दिस इज द, यू नो, ब्लैक काजल, एंड आई थिंक पीछे में जो है ना, जैसे आप ब्रश यूज़ करते हो तो उस तरीके का पीछे स्पॉन्ज दे रखा है कि इन केस यू जस्ट अप्लाई द, यू नो, काजल, एंड उसके बाद इस स्पॉन्ज को यूज़ करके आप इजीली उसको ब्लेंड कर सकते हो टू क्रिएट अ लिटिल स्मोकी इफेक्ट और इंटेंसिफाई योर काजल. सो दैट्स व्हाई आई थिंक दे हैव गिवन ऑन द वन साइड. So this is how it looks. Now coming to the last product, मैंने lipsticks खरीदी हैं. So these are the two lipsticks which I got. One is in the shade Formula, another one is called Snapshot. और जो छोटी वाली है that is a matte lipstick, और ये जो बड़ी वाली है that is a liquid lipstick. I'm gonna quickly open them up and show you guys थोड़ा सा कि कैसा इनका shade है, कैसा नहीं है. Honestly guys, मैंने सब कुछ online खरीदा है, so मुझे भी नहीं पता कि ये shade मेरे पे कैसे लगने वाले हैं, whether it's going to be a too bold colors or too nude colors. I'm not sure, so let me just open them up and see how do they look. I'm just gonna like swatch them up here for you guys. Okay, so this is the matte lipstick. It's a very tiny and small lipstick, and it's in the shade Snapshot. Let me just open this up. So this is how it looks, and let me swatch it for you. So this is basically the color. It is definitely, while applying I can feel it's very smooth. बहुत easily लग गई, और I think the pigmentation is so good. It just blends very nicely if I'm trying to blend it also. But मुझे ऐसे लग रहा है कि ये transfer proof lipstick है. So let's just, you know, apply it in the next part and see. But this is basically the color is. Now next is this liquid lipstick which is in the color Promise. And again they say it has a matte formula. This is how it looks. Okay, so this is the color. Okay, again a very beautiful peach color, and let's see whether, you know, I think it's gonna take a few minutes to just stick on, and let's see whether it's transfer proof या नहीं. But I think we can test it out in the part 2, right? So लेकिन अभी मैं आपको कलर दिखा देती हूँ, और ये चीज़ हम पार्ट 2 में टेस्ट करेंगे. But this is how the color is basically. I kind of like the second one, that is Promise color, because this is the color I you know, I like to wear a lot usually. और इसको थोड़ा सा हम, you know, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं by adding a different color. But when it comes to these kind of lipsticks, I'm actually mostly into liquid lipstick, so I think this one's going to be my favorite. So liquid lipstick, I think so. It's going to be my favorite. Alright, so these were the products which I got. I don't know if they have mascaras या नहीं, मैंने चेक भी नहीं किया, क्योंकि मेरा मेन फोकस था उनके मेन प्रोडक्ट्स लेना जिनसे मैं एक मेकअप लुक क्रिएट कर सकूं. आई ऑल्सो डोंट इवन नो इफ दे हैव आई शेडो पैलेट. आई थिंक उनका नहीं है आई शेडो पैलेट, अभी तक लॉन्च हुआ. सो दिस वॉज द पार्ट 1 जहाँ पे मैंने सारे आपको प्रोडक्ट्स दिखा दिए हैं जो मैंने खरीदे हैं. अब हमारा आएगा सेकेंड पार्ट जिसमें मैं एक लुक क्रिएट करने वाली हूँ इन
डिफरेंट मेकअप प्रोडक्ट्स को यूज़ करके, विच इज़ गोइंग टू बी अ वेरी नेचुरल एवरीडे फ्रेंडली लुक. सो उसके लिए आप वेट करो 2-3 दिन, वो वीडियो आएगा नेक्स्ट. So this was all about today's video, you guys, and I hope you guys enjoyed watching this video. In case you guys want to buy any of these products, so सबके जो product links है, buyout links है, वो नीचे description में mention कर दिए हैं. And if you have any question, do let me know in the comment section below. I will see you guys super soon part 2 में. तब तक के लिए bye.